बीएमसी का वो कल इनॉग्रेशन किया पेड़ वेड़ का, तो तुम वही अपने पीआर से मिलते हो, तो वो मेरा बिजनेस का पीआर क्यों नहीं कर रहे? मतलब वो क्या आपसे तनख्वाह लेती है सिर्फ आपका काम करने के लिए, मेरा काम नहीं करती कि वो फ्री में काम करती है? बहन है आपकी इसलिए। नहीं नहीं, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि कोई इंसान आपको 5 बार बोल रहा है कि ये बिजनेस का आर्टिकल रेलवे का करा दो, तो आप करा ही नहीं रहे हो, और आप उसके साथ फ्री में बीएमसी का प्लांटेशन करने जाते हो। लवली, आपको पैसे मिले क्या वो बीएमसी का प्लांटेशन करने के लिए? नहीं ना। तो वो अगर आपको फ्री में बीएमसी का प्लांटेशन करने के लिए बुला रही है, तो अगर आपकी वाइफ का एक आर्टिकल पेंडिंग था तो वो अभी तक होता क्यों नहीं है फ्री में? तो दिस इज रॉन्ग ना, दिस इज घर में घुस के मारना ना, कि आपका पीआर करे फ्री में, आपको फ्री में बुलाए कहीं बीएमसी का प्लांटेशन करने के लिए, और आपकी बीवी का आर्टिकल करे नहीं, तो आपको लगता है कि वो आपकी रियल बहन सुनीता से बेटर है? Raining today, so I can't sit outside. And there's no place to sit in my house. My house is too small. So now I'm sitting inside because it's raining outside. और मेरे घर में जगह नहीं है। देखो ये साइड पे पूरे सूटकेस पड़े हुए हैं, यहाँ पे मेरा पूरा क्लाउड किचन का सेटअप है। It's okay, Payal. It's okay. It's okay. You can do this. You can do this. We will do the yoga. ये बेबी। अभी हम जितने भी ऑफिसेज में जाएंगे ना, मैंने डिसाइड कर लिया है कि अपने योगा पैंट्स और स्पोर्ट्स ब्रा के ऊपर अपने कंपनी की टी शर्ट पहनो, या तो जिम्नाजियो, या तो हेल्दी हसल, या तो स्वदेश प्रोडक्शन, या तो संग्राम सिंह चैरिटेबल फाउंडेशन। और संग्राम जी भी यही करेंगे, सो दैट कोई अगर हमारे साथ फ़ोटो भी खिंचा रहा है तो हम अपनी कंपनी की पब्लिसिटी कर रहे हैं उनके साथ, ठीक है? क्योंकि वो जो फ़ोटो हमारा इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज वी आर गोइंग टू द ऑफिस एंड वी आर डूइंग अ मीटिंग एंड वी आर मेकिंग एन एफर्ट, वो फ़ोटो में हमारी कंपनी का लोगो आ जाएगा। व्हाट से बेबी? क्योंकि वो लोग अपनी पब्लिसिटी करने के लिए पिक्चर रोटेट करेंगे ना कि संग्राम जी और पायल जी हमारे ऑफिस आए, तो उस रोटेशन में हमारी कंपनी भी मूव करेगी। व्हाट से? ये बेबी। एयरपोर्ट्स के लिए मेरी एक और सजेशन है, आप लोग है ना एयरपोर्ट्स के अंदर, अगर दुबई, शारजाह, एवरीवेयर आई सीन दे हैव प्रेयर रूम्स, ओके ग्रेट, तो वो प्रेयर रूम के अंदर हम भी हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं ना, जस्ट बीइंग वेरी क्लियर इन माई कम्युनिकेशन। और आप लोगों को एयरपोर्ट्स के ऊपर योगा रूम भी रखना चाहिए, बिकॉज योगा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ and it's good for everybody, all the people belonging to different religions. Yeah, so there should be a yoga room on every airport, and in countries where there is prayer room, because they are Islamic countries, in that prayer room I can also go and pray, no, to my God. Will I be allowed? Because God is one, no? So you pray to your God, I pray to my God, and we both pray together in your prayer room. Yeah? Okay, bye. Startup India is a fraud because they don't even give you an opportunity to present your pitch deck and your USP, and they just reject it. So Startup India is working through setting. Awesome, great. It's as fake as a lot of other things. Great, awesome. My outlet is still not activated on IRCTC, so I'll wait and watch, because I've just uploaded this much basic menu, this much. Let it get active. Let me figure out my backend team for Versova Cloud Kitchen, and then we'll put more items. Yeah, but let's see. I've put the basic stuff, thali and everything. Yeah, baby. I will send a proposal to Juhu. I'll send a proposal to Juhu SNDT also, but their canteen is a mess at present, and they will probably charge rental. But I need to understand if I can make profit there or not, because when I met the registrar of Juhu SNDT, then he told me that their budget is very less in terms of pricing for poha and other snacks and food. So once I know the pricing that the girls can afford in Juhu SNDT, because I can't be running a loss-making business for branding purposes. I need to have investors who are then, knowing very well that they are investing money in this brand, and at this canteen there is going to be loss.
because the pricing is very less, because I will not compromise on my food quality. So when I will not compromise on my food quality, the raw material pricing is going to be high. So when the raw material pricing is going to be high, the cooking pricing is going to be high, then the selling price has to balance out so that we don't make loss. But if the selling price is less than the buying price, then it is loss. So even for branding purpose, if I enter a Juhu SNDT, then I need to understand that it is a break-even project or a loss-making project, because they have to allow us to use that canteen premises for outside catering via Zomato, Swiggy, so that I can capture that area. But now that is their internal decision. But as I visited the campus, I will make an effort, because Payal makes effort. फिर बाकी सब भगवान जी पे छोड़ दो. And yes, the investors should also know that which outlet is going to give them profit and which outlet is not going to give them profit, and how the profit is going to come in. Yeah? Okay. I think I'm done for today. Bye. IRCT ka technical person is telling me to make ID cards of delivery boys. He does not have sense that delivery boys ka ID cards is not required. It is a tie-up with Zomato. Then why would Zomato tie-up be forgotten? When you have a Zomato tie-up, then the Zomato delivery boys need to make the IRCTC delivery cards, not Payal Rohatgi's Healthy Hustle, because Healthy Hustle is already tied up with Zomato. But I think it takes little time. Sometimes technical people also are not able to understand basic things. Technical awareness does not mean common sense awareness. ठीक है? Common sense is a different thing. What say? हाँ समझे कि समझाओ. वर्कआउट करते करते दिमाग अलग ही चलता है. ओके, मोदी जी ने अपने लास्ट स्पीचेस में कहा था कि क्या आपको राम राज्य के लिए वोट करना है, क्या आपको जिहादियों के लिए वोट करना है. तो इस टाइम वोटिंग ऐसी हुई कि 50-50 आया, मतलब 234 240, and that side also Congress got vote or whatever, and other people also got vote. Bottom line ये है 50-50. So that means there is no minority anymore in this country. I am not calling the minority jihadi. I am not getting in that zone. I am just saying Ram Rajya, matlab technically those people who worship Bhagwan Ram, and then there are a lot of people who don't believe in Murti Puja. So here it is a lot of assumption, but the thing is that 50-50 vote aaya. So probably the people who worship Bhagwan Ram also did not vote for Modi ji, because in Ayodhya I did not get the votes. But Ayodhya में बहुत सारी job opportunities दी गई, इतनी सारी development हुई, उसके बावजूद the belt did not vote for him. All I can say is that Hindus did not go out and vote because they thought Modi ji तो आ ही रहे हैं and गर्मी है, and what's the need to vote. And probably the other community people went out and voted because they did not want him to come. So bottom line is that there's no minority in this country. तो minority laws, appeasement, reservation क्यों है? सबको समान करो ना भैया. Modi ji, what you through should teach you that in the next coming 100 days, first thing that you need to do is pass uniform civil code all over India. Yeah? Lok Sabha, Rajya Sabha, all the states in India should have UCC. There is no minority, there is no majority, everybody is equal, everybody is uniform in this country. Because जब बात आई राम राज्य और rebels की or whatever, those people who don't believe in मूर्ति पूजा, तो 50-50 वोटिंग हुई ना. राहुल गांधी जी को भी तो वोट आए, and राहुल गांधी जी का मैनिफेस्टो तो क्लियर था ना, appeasement, appeasement, appeasement. It was not about equality. So as you've come back in power through lot of efforts now, let's get to the equality zone. I'm against nobody, baba. आप मुगलों के ही डिज़ाइंस पहनो ईयरिंग में, प्रियंका चोपड़ा नहीं, प्रियंका गांधी जी, मुगलों के डिज़ाइन वाले ईयरिंग पहनो या आप क्रिश्चियन के डिज़ाइन वाले ईयरिंग पहनो. I really don't care. It's just that you want to flaunt something and they want to flaunt something. Good. It's just out there. I want equality in India. हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए ना आपको, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदलनी ना, तो इक्वालिटी तो लाओ. इक्वालिटी भी नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए भैया? जब सबकी पॉपुलेशन सेम हो गई है तो फिर इक्वालिटी क्यों नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, मोदी जी ने बहुत डेवलपमेंट करी है, बहुत अच्छा काम किया. राम मंदिर बनाया, आर्टिकल 370 निकाला. ये दूसरी बात है कि आपको मुगलों के ईयरिंग पहनने हैं, मतलब आपकी पूरी पीढ़ी में आई थिंक अपीजमेंट टूवर्ड्स मुगल्स इज़ देयर, बिकॉज आपको बाबरी मस्जिद
के लिए लड़ना था. I think apparently your party only had the thought process that Bhagwan Ram is imaginary. So I just want to tell you this much, that in Bharat everybody should be equal. What say? You and me are equal, no? You can be Christian, you can be Hindu, you can be Parsi, you can even be Muslim. I really don't know your family tree, but you and me are equal, right? So Uniform Civil Code, Modi ji, give it back to them in the first 100 days. Give it back to them. I asked my husband's lawyer to send me the link for software conversion of PDF to doc. He sent me some link of small PDF, some link application. I used that application ka link and they asked me $500 for conversion from PDF to doc. I paid that. How do I pay that? By putting the card. Then I realized that they are fraud because कोई conversion हुई नहीं. So I informed my husband's lawyer. Anyways, I'm like, forget it. It's petty money. Just forget the whole incident. But then now another $1,000 gets cut into that small PDF account, because my husband's credit card was probably attached to that website. Imagine. So it's a fraud. It's a cyber fraud. So we all need to be very careful कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपके हस्बैंड के लॉयर के व्हाट्सअप से भी मिलता है तो शायद वो इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज्ड होगी. कभी भी अपना क्रेडिट कार्ड मत डालो ऐसी सब वेबसाइट्स के ऊपर, बिकॉज वो व्हाट्सअप ने मुझे बोला कि वो वेबसाइट अच्छी थी. अब वो व्हाट्सअप मेरे हस्बैंड के लॉयर ही यूज़ करते हैं कि वो व्हाट्सअप उनके कोई सिस्टम में साइंड इन है, मुझे नहीं पता. राइट नाउ ही इज़ ड्राफ्टेड अ लेटर फॉर द साइबर क्राइम. बट लिसन, इमेजिन somebody who's a lawyer is sending me the link through his WhatsApp and telling me that this link is safe, and I click on that link and then my husband's credit card gets swiped wrongly. Can you imagine the trap? Just sharing information so that everybody knows what's happening. Yeah, what needs to be told to the public.